Which of the following statements about a compound is incorrect? Basically, we want to talk about the incorrect statement out of all the options provided to us. A molecule of a compound has atoms of different elements. It's a true statement. A compound cannot be separated into its constituent elements by physical method of separation. क्या हम water molecule जो हमारा है H2O, जो पानी है हमारा, it is actually having water molecule. क्या H2O को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, की हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं एंड ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं जस्ट बाय द फिजिकल मेथड्स, नॉट बाय द केमिकल मेथड्स? इज इट पॉसिबल? नो, बाय फिजिकल मेथड्स ऐसा पॉसिबल है ही नहीं. रादर वील बी यूजिंग सम केमिकल मेथड्स टू डू सो. ओके, सो आई विल जस्ट से कि ये कहना कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ये ट्रू स्टेटमेंट है. पहली स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है. अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज of its constituent element. Let me actually give you an elaboration on this particular option. Wait a minute. Talking about the fourth statement, the ratio of atoms of different elements in a compound is fixed. It is also a true statement. But I do have a doubt on the third statement, and that is, let me explain you कि भाई एक कंपाउंड जो है इज अ प्योर सब्सटेंस. अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस containing two or more than two elements combined together in a fixed proportion by mass, and which can be decomposed into its constituent element by suitable chemical methods, not by physical method. अब याद रखो, the properties of the compounds are quite different. जो suppose मैंने पानी लिया H2O, अब ये पानी दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. These are the two elements which are all together forming H2O. So the properties of the compound, ये जो मेरा compound है water, it's quite different from the properties of the constituent element. जैसे कि पानी is a compound, water is a compound containing hydrogen and oxygen combined together in a fixed proportion. Obviously, hydrogen and oxygen, they are actually combined into a fixed proportion by mass. लेकिन properties of water जो हैं, they are completely different from the properties which we study for hydrogen separately and oxygen separately. So a compound retains the physical properties of its constituent elements. It's a false statement. An incorrect answer to the options which we have been provided over here for the compound. So we'll be marking option number 3 to be the right answer, क्योंकि हमसे यहाँ पर incorrect statement पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पूछा गया है. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन.